Let me just share it. Pause. Can you hear this? Can you hear the sound and see the screen? Yes, ma'am. Yes. So let's just spend 4 minutes. Specifically 4 minute की video है. ठीक है? So let me just put it down and I'll just start it. Hello everyone. Thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. We were of different ages. We were made to like stand in a line. Now I'm going to ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see like the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody? Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? Like you think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted? Do you know how to invest in mutual funds? Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now everyone who's in front, could you please turn around and look behind you? Initially, when you guys started moving, there wasn't such a big gap. My question is, when did this gap start to occur? The minute the questions became about managing money, the gap between men and women became very clear and evident. You know, women handling certain responsibilities regarding their own life, which were always passed on to someone else in the family or the men. There was a slight unfairness I realized at that time. But at that point, it seemed normal. I was upset. I wanted to be at the front of the line. It's like, why don't I know this? Why am I not confident enough to say, yes, I am able to understand this? It was quite an eye-opener for me because I always depended on the men of the family to take care of my investments and, plan my future. I felt that obviously men are more into it than women. So eventually I did expect the gap to be there. Over the years growing up, there were certain very traditionally masculine tropes that were assigned for him and certain traditionally feminine tropes that were assigned for me. For women, it's practically debarred to learn to know and to focus on money. I wish I had known from the beginning of my childhood and like kind of thought about that I would be doing so much better. Just actionable measures is what we want really. Right. So back to us. Yeah, there are a few yes in the chat box. Okay, so I think the yes for the fact that you could see the video. Right, so this was a very small video. I believe some of you might have already seen this video because this came out a long time back. It's not a very recent video, but yes, thank you, Samaira. I would definitely share the link. I specifically wanted to share this link of the video with all of you because there are a lot of questions which were asked in this video.
lot of questions, right? And I want you to answer those questions for yourself after this session ends, right now abhi main sabse wo answers nahi pooch sakti. There are around 120 participants. I cannot repeat those questions and ask, but I want each one of you to ask those questions from yourself. So just give me a moment. I will copy the link side by side without wasting time and put it in the chat box. You'll all have access to it. Okay. However, just a very quick poll. Okay. Sabne questions sune. I'll quickly repeat those questions. The question was about, do you undertake your investments unassisted? Do you know the difference between mutual funds and SIP? Do you know the exact breakup of your salary? Have you bought any vehicle unassisted? Have you taken any insurance policy in your name without any kind of assistance? Do you know the rate of gold? Do you file your income tax return yourself? So right now, how many of you had a yes to 90%? Let's not say 90%, but majority of these questions. Without any hesitation, without any judgments, how many of you had a yes to majority of the questions which were asked in this video? Okay, I see a lot of not me, right? Not me. Great. I'm very happy that at least you accept this fact, because acceptance is the very initial foundation of building up the knowledge. Unless and until you accept that, yes, this is something that I lack, you cannot gain that knowledge. Perfect. Thank you so much for being so truthful to yourself and to me. Now, what we are going to do is we will try through this boot camp to at least encourage you to have a yes to some of these questions, right? If we talk about income tax return, right? Income tax return, जब कोई सुनता है ना taxation, तो उसको लगता है ओह टैक्सेशन कितना मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है? इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, so many provisions, so many sections, so many deductions, so many rules, regulation, amendment, ठीक है? हम नहीं पढ़ सकते, we cannot read that, and if we cannot read and understand that, we cannot file our return. But I tell you, I am a teacher of e-filing of returns. I teach students how to file their income tax returns, and it's not difficult at all, right? It is not difficult. And I'm not just saying it because I know income tax, or I teach income tax, or I teach how to file income tax returns, but it is so simple. The government wants you to file your income tax return. The government wants you to give tax. Government चाहती है आप उसको पैसा दो, इसलिए government ने पूरा income tax process file करने का process जो है इतना easy बना दिया है, right? Not going into the detail, but what I'm trying to tell you is that all of these things are not as difficult as we believe them to be. The only problem is that शुरू से ही ये role जो है, managing finances, taking care of our insurance policies, taking care of our loans, taking care of our investments, ये सब have been done by maybe the males of our family or someone senior in our family, and therefore we thought that ये तो कोई मुश्किल काम होता होगा, so let's just let them do it. क्यों इसमें अपना दिमाग लगाना? But it's not at all difficult, and that is the first thing that you need to understand. मुश्किल नहीं है, आसान है, और बहुत आसानी से किया जा सकता है. जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, सब बहुत आसानी से, सबका आंसर यस हो सकता है, और सबके बारे में जानकारी बहुत इजीली मिल सकती है. सिर्फ जानकारी नहीं, प्रैक्टिकली उसको करना भी बहुत आसानी से हो सकता है. ठीक है? सो स्टेप बाय स्टेप इस बूट कैंप में वो सब चीजें हम करेंगे, सीखेंगे, सो दैट यू कैन एटलीस्ट टर्न अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनका नो आंसर किया, उनको यू कैन टर्न इट इनटू अ यस. ठीक है? ऑलराइट. I just, I already told you that if you accept this thing, it's a very good thing. You accept that you have the lack of knowledge. So let's just start with the basics. Let's just start with the basics of financial literacy, of the basics of financial discipline. After you have accepted that, yes, there is a need for you to have the financial literacy and need to understand a lot of other things. So, I'll just tell you a little about my own story, so that you know that जहाँ पर मैं अभी हूँ, the fact that I'm taking this session and trying to share whatever knowledge I have. This was not how I was. I was just like a lot of you who are sitting here, who say that a lot of questions, answer to a lot of questions were no, right? So I was just like you a few years back, जहाँ पर मुझे कुछ knowledge नहीं थी.
मुझे नहीं पता था कि टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मुझे अपनी सैलरी का ब्रेकअप तक नहीं पता था, मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी जो इनफ्लोज हैं, व्हाटएवर आई एम अर्निंग, what are the various sources. I did not know that if I have a bank account and I have some money in my bank account, what kind of an interest rate I'm earning. I did not even know that, right? मेरा जो बैंक अकाउंट था, that was being operated by my mother or my father because it was a joint account and मुझे कुछ knowledge नहीं थी. But once I started earning, I had my first salary, I realized, and it was too late, I realized too late that, you know, I should have started investing a long time back. I read a lot of books, I read a lot of magazines, I went through a lot of channels, workshops, etc. But, and this, whatever I'm going to share with you is an assimilation of a lot of things, but mostly it's an assimilation of my own experiences, right? It may work for a lot of you, it may not work for some of you, because again, I said, a lot of you are from different backgrounds, different age groups, but definitely whatever I'm going to share, I just hope that it becomes relevant and you apply that in your real life. So the first thing is that you can also do it. The first thing that for you to understand is you can do it. It's not difficult to be financially literate. It's not difficult to do any kinds of investments. It's not difficult to know what are your sources of income. It's not difficult to file your income tax return. It's not at all difficult. If you finally accept this, because this is the truth, then we come to how do you know about these things, kahan se ye sab knowledge milegi aur kaise isko karna hai. So sabse pehli cheez, the first thing that you should know about is to be financially included, right? Independence, literacy, baad mein, to be financially included, to be in that financial arena, to have that financial mindset कि मुझे मेरा पैसा खुद हैंडल करना है, खुद मैनेज करना है, मुझे अपने financial decisions खुद से लेने हैं. The first thing is you need to have your own bank account, a bank account which is in your name, independently, which is operated by you, जिसकी चेकबुक है आपके पास, जिसका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है आपके पास, जिसकी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है आपके पास. ओके, बैंक अकाउंट एक ऐसी चीज है जिससे सबसे पहला स्टेप लिया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना एज वेल. दैट एंटायर योजना, दैट एंटायर स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्रीज एजेंडा वाज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन, no matter where that person is, रूरल एरिया में है, विलेज में है, स्लम में है, कहीं पर भी है, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. चाहे उस पैसा उस अकाउंट में पैसा ना हो, जीरो बैलेंस अकाउंट हो. दोज वर एक्चुअली जीरो बैलेंस अकाउंट्स, नो फ्रिल्स अकाउंट, एज इन कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट द एम टू ओपन दिस अकाउंट वाज दैट जैसे ही लोगों का अकाउंट खुलेगा, एटलीस्ट दे वुड नो दैट ओके, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माय नेम. कुछ अगर मेरे पास 10 रुपए भी आते हैं, आई एम एबल टू सेव 10 रुपीज ऑल्सो. I do not have to keep it in my cupboard, in my almirah, below the bed, below the carpet, in the kitchen. I have to keep it in a bank. And once you have that relationship with the bank, many things follow. You yourself start to become aware of what all facilities are being offered by the bank to enable you to save your money and to finally invest your money. Okay? So how many of you at least have a bank account in your name operated by you? Say yes or just send a thumbs up if you have your own bank account at least. If you do not, say no. That's again no. Okay, one said no, not 18 yet, in the process. I do have a bank account. I do have a bank account but not operated by me. I'm 16, not operated by me, not 18 yet, in the process. Okay, so ठीक है. So majority of the answers are about having, like majority of you have a bank account. Then some of you have a bank account which is not operated by you, which means that maybe you have a joint account or you are a minor whose account is being operated by your parents or by your guardian. Or maybe you do not have a bank account because you are not of age, right? बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. अगेन मुश्किल प्रोसेस नहीं है बैंक अकाउंट खोलना. केवाईसी, आपका आधार कार्ड लेकर जाओ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एंड दैट्स ऑल. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट. इफ यू हैव ओपन अ बैंक अकाउंट, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है. नहीं है या प्रोसेस में है, प्लीज 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 गेट इट ओपन एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, अगेन
if you are thinking कि यार बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, या you know when I was asked to open a bank account, या मुझसे कोई बोलता है कि या you already have a bank account, एक और बैंक अकाउंट खुला लो, ये बेनिफिट होंगे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है that it's too much of a headache, right? I have to have a net banking also because मुझे funds transfer करने होंगे, because the funds would be in the bank. I would have to have an ATM also because if I don't have cash in my hand, I'll have to withdraw it from an ATM from my bank account. So what if I lose my ATM? What if someone hacks my bank account? What if bank is robbed? So I used to have all of these thoughts in my mind when someone asked me initially that अपना bank account खुलवा लो या अपना independently bank account operate करो. I had all of these apprehensions. So if you have all of these apprehensions, that's perfectly fine. But the banking system in India, thankfully, fortunately, is very robust. इंडिया में जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, आई वोंट से अबाउट द कोऑपरेटिव बैंक्स, बट कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांगली बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट है. द गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट. बैंकिंग इन इंडिया इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ आवर इकोनॉमी, और इसलिए बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है बैंकिंग को प्रोटेक्ट करने में, बैंकिंग के लिए साइबर क्राइम्स को रिड्यूस करने में. सो अ लॉट ऑफ सेफगार्ड्स हैव बीन पुट अक्रॉस. सो दोस एप्रीहेंशंस आर फाइन, बट देन सिंस बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसलिए यू कैन डू अवे विद ऑल ऑफ दीज एप्रीहेंशंस एंड डाउट्स एंड डेफिनेटली हैव अ बैंक अकाउंट. Nandini is saying my account, I have an account, but parents keep track of bank statement. Not that I'm spending though. Okay, so again, I had this problem as well. My parents used to keep a very close watch on my bank statements. कहाँ से कितना पैसा आ रहा है? पैसा तब तो ज़्यादा आता नहीं था, but कितनी spending कर रही हूँ मैं? Which again, I was not initially comfortable with it. Why are my parents keeping track of where am I eating out? मैं कहाँ से कपड़े खरीदने and all that stuff. But if you have access to your own bank account and you can operate it independently, you will be able to prove to your parents as well that there's no need to keep a track because you are independent to keep a track yourself on your savings, investments, spendings, etc. जिस पे भी हम आएंगे कि कैसे ट्रैक रखना है, ट्रैक रखने वाले भी चीज पे भी हम आएंगे, ठीक है, ताकि किसी और को ना ट्रैक रखना पड़े. You are the ones who are responsible for yourself and keeping track. Okay, so first thing, have a bank account. If you do not have a bank account, start the process. ठीक है, नहीं पता कैसे खोलना है बैंक अकाउंट, और अगर बैंक में जाने में डर लगता है कोविड की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, नो वरीज, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स खुलते हैं. ठीक है, देयर आर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स जो वर्चुअली खुल जाते हैं. कभी कभी कुछ कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर ब्रिक एंड मोटर खुलवाना है, प्रॉपर एसबीआई या पीएनबी में खुलवाना है, यू कैन फाइल एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द पीपल कम टू योर होम टू वेरीफाई यू, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन आपका केवाईसी कंप्लीट करना. केवाईसी बेसिकली मींस नो योर कस्टमर, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाना होता है एज अ प्रूफ. सो दे इवन कम टू योर होम to do your identity check and then they open a bank account for you. So it's such an easy process. You do not even have to step into a bank to open a bank account now. सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है. ठीक है, सिंपली गूगल पे डालो आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन दिस बैंक एंड उनकी वेबसाइट खुल जाएगी एंड देन यू कैन गो थ्रू द प्रोसेस. Yes, Ritika is saying KYC भी अब तो ऑनलाइन हो गया है. So KYC now process of KYC is also online. Nobody needs to come also. ठीक है, I have seen a lot of cases जहाँ पे आप अपनी पिक्चर होल्ड करोगे, सेल्फी क्लिक करोगे, कुछ टाइप करके सिग्नेचर के साथ डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, KYC भी पूरी हो जाती है. ठीक है. Lalit Singh, please educate all on sources of taking money into the bank account. Do not transact or take money from unknown sources. Would be good if they are made aware of AML piece a little bit. Okay, anti-money laundering. Okay, so if you have a bank account, as Mr. Lalit mentioned, that there are a few things that you need to take care of. ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना पिन, एटीएम, नेट बैंकिंग पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग पिन, इन सब का सेव गार्ड करो. ठीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले सकते हो. इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट या इंस्टाग्राम का अकाउंट का एक्सेस संभाल के रख सकते हो, पासवर्ड संभाल के रख सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन टेक केयर ऑफ योर पिन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स और हैकिंग. अनफॉर्चुनेटली ये जीरो नहीं हुआ है, इसके इंस्टेंसेस जीरो नहीं हुए हैं, बट नो वरीज, अनलेस एंड अंटिल यू आर अवेयर, अनलेस एंड अंटिल यू आर लिटिल कॉशियस, यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर ओन मनी एंड योर ओन बैंक अकाउंट जहां पे आपका पैसा रखा हुआ है. ठीक है, सो first things, ठीक है. Now if you have a bank account,
इसी से फॉलो होता है दैट आपके पास सिर्फ बैंक अकाउंट से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक्सेस होना चाहिए थ्रू योर, जस्ट एज आई मेंशन, थ्रू योर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम. ओके, सेफगार्ड करो, टेक ऑल दीज फैसिलिटीज, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग दीज फैसिलिटीज. ऐसा नहीं है बैंक अकाउंट खोल के बैठ गए, 1000 रुपए डाल दिए एंड देन फर्स्ट सेशन में बोला गया था बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट खोल लिया, 1000 रुपए डाल दिए, आराम से बैठ गए घर पे जाके. नो, यू हैव टू ऑपरेट दैट बैंक अकाउंट, राइट. ऑपरेट का क्या मतलब है? ऑपरेट तभी कर पाओगे व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग. कुछ खरीदना है, कैश की जगह पे through your UPI, which is linked to your bank, or through your debit card, right? Transfer करने हैं funds, net banking का use करो, because unless and until you do it, you are not going to gain the confidence, right? Again, I'm telling you, सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा के काम नहीं बनेगा. Open your bank account. If you already have a bank account, नेक्स्ट डे, कल ही जाओ, परसों ही जाओ और बैंक को बोलो कि भाई मुझे अपना नेट बैंकिंग चाहिए. वो उसी टाइम इशू करके देंगे. इट्स नॉट अ लेंथी प्रोसेस, राइट. उसी टाइम इशू होता है डेबिट कार्ड, उसी टाइम इशू होता है चेकबुक, उसी टाइम इशू होती है नेट बैंकिंग. गेट इट डन, स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग. ओके, जब तक ट्रांजैक्ट नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप दैट यू नीड टू टेक बिफोर यू कैन मैनेज योर फाइनेंस. फाइनेंस को मैनेज करने से पहले कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप उसको डाल के, मेजर करके, ट्रैक करके मैनेज कर सको. ठीक है, योर बैंक अकाउंट इज योर प्लेटफॉर्म. इट्स अ काइंड ऑफ योर तिजोरी. ठीक है, तिजोरी वैसे बट मुझे यूज करना नहीं चाहिए ताकि यू नो आई सम ऑफ यू मे गेट अगेन डाउटफुल एंड इम्प्रहेंडेड, बट इट्स योर स्टे, इट्स योर सेफ लॉकर जहां पे आपका पैसा है और आप उसको कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, along with a lot of facilities that the banks now give. And why I'm telling you and why I'm repeating all of this again and again is you might think कि मेरे पास तो अभी I am not earning, right? Some of you said I'm not even 18, I'm only 16. So you might think that I'm not even earning right now. So what is the purpose of a bank account? मैं करूंगी क्या बैंक अकाउंट खोल के? The purpose is number one, whatever small savings you have, right? जैसे मैं क्या करती थी when I didn't have any earnings, obviously I used to give this शगन के लिफाफे on भैया दूज या किसी की शादी में या किसी नाना दादा के घर जाओ तो, and I believe that tradition is still there. You might you know, many of you receive those kind of shagans and small money packages from your relatives. So I used to deposit that in my bank account, right? And although I was not very aware, but when I started doing that, I realized that there's so much scope for me to actually, it gives me so much pleasure to see that money growing. अच्छा आज 100 रुपए डाले, अगले महीने किसी रिलेटिव से 500 रुपीज मिले, उसमें से 200 रुपीज स्पेंड कर दिए, 300 रुपीज बैंक अकाउंट में डाले. So it gives a lot of confidence, satisfaction when you see that amount is growing, and it gives you a lot of freedom in your mind as well, that आपको कहीं छुपा के रखने नहीं पड़ रहे अपने पैसे, right? So it gives you that freedom, it gives you that confidence, even if you are underage, even if you're in the process, even if you do not have any continuous source of income जो आप बैंक में डाल सको. Small things like this become the foundation of becoming financially independent and financially literate. ठीक है, इसलिए this is the first thing that I'm emphasizing on again and again. Okay, a lot of you are saying relatable, perfect. Okay. So this is the first rule of financial discipline, financial literacy. Have a bank account and operate it yourself. Do transactions, deposit, withdrawal, transfer, payment. Transactions, simple transactions. Okay. Okay. The second rule is know your income details, right? Okay, how many of you are earning right now? किसी भी सोर्स से, सैलरी हो सकती है, छोटू मोटू बिजनेस हो सकता है, हॉबी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी, यू आर अर्निंग. ठीक है, सेजल सेज नॉट येट. हॉबी बिजनेस है, सारा सिजा हैज अ हॉबी बिजनेस. Rishita said not yet. Okay. Scholarship, Simran is receiving a scholarship. Jia Prachi saying, Vanchika Unnati saying not yet. Okay, a lot of, okay, Bhavika says internship. So a lot of you, yes, interest is definitely an income, Ritika, definitely. And I'll come to it. Okay, a lot of you are saying that you are not earning yet. No issues at all, okay? Okay. If you have a bank account and if you have kept some money in that, you are earning. सबसे पहले तो,
ठीक है, बहुत छोटी अर्निंग होगी. Prachi is saying she is villa, but it's okay. Okay, we need to be villa to figure it out that what we need to do in our life as well. So villa is also your mind at work. So if you are fulfilling the first step, that is if you have the bank account, if you have some money in the bank account, 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, you are earning. You are earning interest on the money in your bank account. ठीक है, मैं पहले इससे स्टार्ट करूंगी. I'll start with the interest and then I'll move on to other kinds of earnings. But if you are having that interest in your bank account, you are earning. Although let me tell you, bank interest बहुत small होता है, बहुत छोटा. We have in India the rate of interest on deposits, it's very small, around 3 to 3.5% per annum का interest मिलता है. Which means अगर आपने 100 rupees रखे हुए अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको 3 rupees ही इंटरेस्ट मिलेगा, 3.5 rupees पर ईयर. वो भी तब जब आप 100 rupees कॉन्टिन्यूसली रखते हो अपने बैंक अकाउंट में. ओके, बट नॉनदलेस इंटरेस्ट इज एन इनकम. ओके, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट इज एन इनकम. सेविंग्स इंटरेस्ट में सेविंग्स अकाउंट में रखा है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है. फिक्स डिपॉजिट में जो अगर पैसा रखा है बैंक अकाउंट में, उससे पैसा आ रहा है. ऑल ऑफ दीज आर योर इनकम्स. Samya says, okay, I didn't know I was earning already. Yes, you are. So again, be glad about this. So if this is the first thing. Secondly, if you are earning from some other sources, for example, scholarship hai, internship ki stipend hai. Okay, if you are earning from a small hobby business, right? मतलब you are doing some hobby, उसी से छोटा मोटा business start कर दिया. Very good start. I myself started with a hobby business before I got my full-time job. Very good source of income, because that also gave me a lot of confidence when I started, you know, making things as a hobby and then started selling them. So any type of income that you are earning, चाहे वो hobby business से हो, चाहे वो scholarship हो, चाहे वो internship की stipend हो, salary हो, या फिर आपका कहीं से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कुछ ही किसी को कुछ सेल करके कुछ गेन अर्न किया है. ऑल ऑफ दीज आर काइंड्स ऑफ इनकम. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि कहीं से भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, यू नीड टू नो द ब्रेकअप ऑफ दैट इनकम. ठीक है, ये जो वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट डू यू नो द एग्जैक्ट ब्रेकअप ऑफ योर सैलरी. सिर्फ सैलरी का ब्रेकअप ही नहीं, किसी भी इनकम, व्हाटएवर सोर्स ऑफ इनकम यू आर अर्निंग, यू शुड नो द ब्रेकअप ऑफ योर इनकम. यू शुड नो where your inflows lie. आपका पैसा आ कहां से रहा है. जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका पैसा आ कहां से रहा है, तब तक आप लगाना कहां है पैसा या आउटफ्लो कैसे होगा, you are not going to be able to figure it out, right? So you should be aware कि अगर जिन लोगों का इस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि बैंक इंटरेस्ट से उनको इनकम आ रहा है, now you are aware, right? जिनकी सैलरी इनकम है, you should have access to your salary slip. I know a lot of people who are earning salary from some organization and they do not receive a salary slip. या फिर they receive a salary slip में basically होता है कि उसमें details होती हैं सारे इनकम की, कि बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, परक्विजिट्स कितने हैं, कितना टैक्स डिडक्शन हो रहा है. ये टर्म्स सुनने में बहुत बड़े बड़े लगेंगे, बट इफ यू आर अर्निंग मनी, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो कि ये बेसिक सैलरी क्या होती है, ये टैक्स मेरा कट रहा है, क्यों कट रहा है, मेरा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में काट के पैसा ले रहा है, क्यों ले रहा है, मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, मुझे डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई, क्यों मिल रहा है, क्या 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 खास कर दिया कि मुझे बेसिक सैलरी के ओवर एंड अबव ये सब मिल रहा है. सो यू शुड नो, राइट? सीटीसी बोला जाता है जब भी आप प्लेसमेंट ले जाते हो, तो आपको बोला जाता है कॉस्ट टू कंपनी. ओके, खुशबू जस्ट मेंशन सीटीसी, राइट? तो जब भी आप कहीं एम्प्लॉयमेंट लेते हो तो आपको बोला जाता है आपकी सीटीसी होगी 10 लाख रुपीस, बट देन सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी. कंपनी को आपको एम्प्लॉय करने से कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है. सीटीसी डज नॉट मीन दैट 10 लाख अगर सीटीसी है तो 10 लाख आपके हाथ में आएगा. उसमें से देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी डिडक्शंस. कंपनी पहले से ही टैक्स काट लेगी, कंपनी पहले से ही प्रोविडेंट फंड काट लेगी, कंपनी उसमें आपके वाउचर्स निकाल लेगी सारे, बोलेगी आपके जो वाउचर्स है खाने पीने के वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं. सो द एक्चुअल अमाउंट दैट यू गेट इन योर हैंड एज अ सैलरी इज very less as compared to the CTC that is quoted. Therefore, it's essential for you to not be misguided by the big figures that you see कि CTC इतनी है, सैलरी इतनी है. You need to understand कि actually में मेरे हाथ में कितना आएगा, what is going to be the actual inflow in my hand, and what are the parts of those inflows, right? Every part is affected by taxation.
every part of the inflows, every part of your income is affected differently by taxation. Taxation का एक separate session होगा जो I think future upcoming session में discuss होगा. But essentially why it's important for you to know the inflows, बैंक से कितना इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरी में से बेसिक सैलरी कितनी आ रही है, मैंने अपना फर्नीचर, मैंने अपनी गाड़ी सेल की थी, या मैंने अपना घर सेल किया था, मैंने 2 करोड़ का खरीदा था, मैंने 3 करोड़ में सेल किया, तो 1 करोड़ जो मेरा गेन है वो भी मेरा एक गेन है, इनफ्लो है, ठीक है, उसका भी अकाउंटिंग. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी योर इनफ्लोज, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव सर्टेन टैक्स implications, and all of these are going to affect your finance plus your outflows, and therefore it's essential for you to be very 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 clear about your inflows. ठीक है, inflows के लिए clear होने के लिए you also need to be able to track your bank statements, right? Mr. Lalit just mentioned a few minutes back that sometimes what happens is that if you do not keep track of your bank statement कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, there's a possibility that your bank account is misused by some external sources. Okay, there's a possibility, unfortunately बहुत मतलब कम है, rare है, but possibility है, जिसको हम money laundering बोलते हैं. ठीक है, अगेन जार्गन है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट यस योर अकाउंट कैन बी मिसयूज, सो देयरफॉर यू नीड टू कंटिन्यूअसली ट्रैक योर बैंक अकाउंट की कोई अननेसेसरी पैसा तो नहीं आ रहा. तो कभी कभी क्या होता है, आई जस्ट रेड इन अ न्यूज़पेपर अ फ्यू डेज बैक कि देयर वाज अ पर्सन, नॉर्मल वर्कर, बहुत कम सैलरी थी उसकी, ही रिसीव्ड lakhs and lakhs of rupees in his bank account. ओके, एंड जब उसने देखा कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, आई थिंक 2 लाख और समथिंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, ही वेंट ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री. उसने ज्वेलरी खरीद ली अपनी वाइफ के लिए, उसने एक गाड़ी शायद बुक कर ली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसने कपड़े खरीद लिए, ही डिड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट बैंक ने गलती से उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया था. सो व्हाट हैपेंड इज समथिंग बैंक से, समटाइम्स बैंक से भी गलती हो जाती है क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर्स काफी सारे सिमिलर होते हैं, तो उस अकाउंट में करने की जगह उनको किसी और अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना था, बट गलती से उस इंसान के अकाउंट में क्रेडिट हो गया. एंड जैसे ही उस इंसान को पता चला कि मेरे अकाउंट में 2 लाख 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं, उसी दिन दे वेंट ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री, ज्वेलरी शॉप चले गए, मॉल चले गए, कार बुक करा ली, एंड सारा पैसा खर्च कर दिया. एंड देन द बैंक सेंड देम अ नोटिस कि भाई हमने गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो पैसा वापस करो. बट देन ऑब्वियसली दैट पर्सन couldn't give back that money because he had made those purchases. So उस पे अगेन कोर्ट केसेस हुए चल रहे हैं उस इंसान पे, and he had to, now he has to somehow give that money back because that money was not his money, right? So ऐसे खुश नहीं हो जाना है कि अगर एकदम से कुछ पैसा आ गया हो. बैंक से भी कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी हो सकता है मैं किसी और को पैसा ट्रांसफर कर रही हूँ बट बैंक अकाउंट गलत लिख दिया हो, तो मैंने किसी और को गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया. ऑल दैट, इफ यू स्पेंड दैट मनी विच इज नॉट योर्स, विच इज गलती से जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो वो आप यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू रिटर्न इट बैक, एंड इफ यू डू नॉट रिटर्न इट बैक, definitely there would be court cases against you, right? The court will definitely ask you to give it back and recover that amount from you somehow. Okay, so now that process is going on, but yes, you need to track your bank account statement so that you are not in such a situation. Okay, कोई गलती से पैसा आता है तब भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गलती से आया होगा, दिस इज नॉट माय मनी. और कभी आपको लगता है कि कोई पैसा आना चाहिए था बट नहीं आया था, कोई सैलरी आनी चाहिए इस मंथ की बट इस मंथ की सैलरी नहीं आई, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको वो सब शो कर देगी. ठीक है, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर इनकम्स, इनफ्लोज एंड द ब्रेकअप्स ऑफ ऑल ऑफ दोज इनफ्लोज इज important. That is the second thing, that is knowing your sources of income and knowing the breakup of all of these sources of income. Okay, I'll just read a few comments. Mistake went by both side of party. Mr. Lalit Singh, sometimes friends, relatives, anybody can ask, I will give you cash, please transfer money, just need to be conscious. Right, definitely there can also be done that, you know, you are asked by someone that मुझे पैसा दे दो मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा. Just be conscious कि मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ illegal activity manipulation नहीं हो रही है. उसके लिए भी you'll have to be just checking your bank account statements and be aware about the same. So this was the second thing. The third thing is that you need to maintain a record. ओके, बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है वो बैंक इशू करता है. बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, आपके पास पासबुक होती है, जिनके पास बैंक अकाउंट है उनको पता होगा, बैंक जब भी बैंक अकाउंट खोलता है वो आपको एक पासबुक इशू करता है.
पासबुक में आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं और आप हर बार अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हो। पासबुक में लिखा होता है ये अमाउंट आपका क्रेडिट है, ये अमाउंट आपके बैंक में आया है, इनफ्लो हुआ है, और ये अमाउंट डेबिट हुआ है, कोई एक्सपेंसेस, कोई पेमेंट आपने करी है, कोई ट्रांसफर करी है, तो ये सारा लिखा आ जाता है स्टेटमेंट में, रिकॉर्ड आ जाता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में, आपकी पासबुक में, राइट। अब वो तो हो गया बैंक अकाउंट का, बट यू जस्ट डू नॉट हैव टू लिमिट योर statements or your record keeping to bank account. You have to maintain a record for yourself in any way that you feel comfortable. It can be in your phone. I prefer phone and Excel sheet. It can be in your desktop. It can be in a Google Drive. Any ways that you're feeling comfortable, right? I'll show you an example also. I'll show you how I maintain my own records, so that if you feel that is the way which suits you as well, you can take that up. I will share an Excel sheet also if you feel that, you know, that can work out for you. But maintaining a record is the third most essential thing. Okay? Maintaining a record means, okay, maintaining a record means पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो कर लिया आपने, बट पैसा कहाँ जा भी रहा है। ओके, वेरी माइन्यूट, छोटी सी छोटी डिटेल्स अबाउट योर एक्सपेंसेस needs to be recorded. Why it needs to be recorded? It keeps you on the right track. It keeps you disciplined. It keeps you in a financial discipline, right? And also it tells you and it enables you to find the difference between your inflows and outflows. जब तक आपको ये डिफरेंस नहीं पता चलेगा, गैप नहीं पता चलेगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि क्या मैं जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ या मैं जरूरत से कम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर मेरी सेविंग्स है तो मुझे करना क्या है इन सेविंग्स का, क्या मैं इसको बैंक अकाउंट में रहने दूं या मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करूं। तो जब तक आपको ये गैप ही नहीं पता होगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो अगेन, इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग दैट इज फॉर सम अदर सेशन, बट बिफोर इन्वेस्टमेंट्स comes a very basic thing कि रिकॉर्ड मेंटेन करो प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ। The second one, Dikshika, the second one is that know your income sources and the breakup of your income sources. So I'll repeat the first three rules that I've just told you, और भी rules हैं, मैं repeat कर देती हूँ। First rule was have your own bank account which is operated by you, and not just have it but operate it. Get a net banking PIN, get an ATM, get a mobile banking app with a PIN user ID and operate it. Payments karo, funds transfer karo carefully, cautiously. Okay, this is the first rule. Second rule is know your sources of income as well as the breakup of your income. पता होना चाहिए कि आपकी income आ कहाँ से रही है. Bank interest is a source of income. If you're selling something, it's a source of income, right? If you're receiving scholarship, it's a source of income. Okay, and if you're receiving an income, उसके parts क्या हैं, breakups क्या हैं. Okay, that was the second rule. Third rule is मेंटेन अ रिकॉर्ड, अ प्रॉपर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का ये मतलब नहीं है हाँ दिमाग में मैंने जनवरी में यहाँ पैसे खर्च कर दिए, यहाँ पैसे खर्च कर लिए, हाँ जनवरी में मेरे पास 10,000 की सैलरी आई थी एंड 6,000 मैंने स्पेंड कर दिया तो रिकॉर्ड हो गया मेरे दिमाग में। This is not a record. This is a very poor way of keeping a record if you are relying on your memory, right? So Rasika, I just repeated it. If you want me to repeat it again, you can put it in the chat box once again. What I'm going to do right now is that I'm going to share an Excel sheet. I'll just show you an Excel sheet. Jahan pe I'll show you how I maintain my records in the form an Excel sheet. मैं पहले records रखती थी अपने phone में in the form of notes. अभी भी I use notes a lot because it allows me to keep a record of my expenditures on the go. But then I have switched to a formal method of keeping a record, which is through an Excel sheet. जिससे मेरे लिए calculations भी बहुत easy हो गई हैं, tracking भी बहुत easy हो गई है, and overview देना भी बहुत easy हो गया. So I'll just share this Excel sheet with you to give you an idea how I do it. Can you see this Excel sheet? Yes. Perfect. So as you can see, this Excel sheet has 4 tabs. यहाँ नीचे 4 tabs हैं. ENR stands for expenditure and receipts. Investments,
my investments are in this, TDS and tax, and finally dues to receipt. ठीक है, आप अपने हिसाब से जितना आपको सही लगे आप बना सकते हो. मैंने ये सिर्फ जनवरी मंथ के लिए बनाया है, ठीक है, और ये सिर्फ एग्जांपल आई एम शोइंग यू. ऑब्वियसली आई हैव मेंटेन्ड इट फॉर एवरी मंथ, बट देन आई एम शोइंग इट जस्ट फॉर द मंथ ऑफ January 2021 आफ्टर removing a few figures, but it is for the purpose of your knowledge and your idea and taking a reference कि आप कैसे बना सकते हो. So the first sheet is about E&R, earnings, sorry, expenditures and receipts. Receipts are basically inflows, expenditures are basically outflows. तो मैंने सब mention किया है कि जनवरी मंथ में मेरे को सैलरी मिली है, मुझे वर्कशॉप मैंने ली तो मुझे कोई फी मिली है, मुझे कहीं से कैशबैक मिला है, मे बी आई डिड सम शॉपिंग और मुझे उसका कैशबैक मिला, या मुझे पेटीएम से कैशबैक मिला, दैट इज ऑल्सो एन इनकम, राइट? अनलेस एंड अनटिल आप उसको दिखाते हो कि डिस्काउंट है, आप उसको डिस्काउंट की तरह दिखा सकते हो. मैं उसको कैशबैक दिखाना अच्छा समझती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है. ठीक है, सो सबकी अपनी अपनी सोच है. पिछले साल से, पिछले महीने से मैंने कितना ब्रिंग फॉरवर्ड किया और मुझे बैंक इंटरेस्ट कितना मिला उस महीने में. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. उसमें से ही मैंने कितना कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा किया, चाहे वो कैब हो गई, चाहे वो मेट्रो हो गई. यूजुअली मैं क्या करती हूँ, हर महीने सेपरेटली दिखाती हूँ. दैट मेट्रो का आई डिड अ 500 रुपीज का रिचार्ज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. कैब में मेरा 420 रुपीज लगा, या मेरा कहीं जाने में 600 रुपीज लगा. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आई जस्ट कंपाइल इट टुगेदर. ठीक है, सो इट्स अगेन अप टू यू, आप कितना डिटेल्ड दिखाते हो या कितना कंपाइल करके दिखाते हो. मैं डिटेल दिखाती थी, देन बाय द एंड ऑफ द मंथ आई कंपाइल इट टुगेदर, थोड़ा सा उसको और बेटर करने के लिए. आई परचेज सम गिफ्ट्स, मैंने बिल्स पे किए, मैंने वाईफाई पे किया, मैंने बुक्स खरीदी, आई हैड मैंने बाहर खाया पिया, मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, मैंने क्लोथ्स खरीदे, एप्रल्स खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, मेडिसिन खरीदी. ऑल माई रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एट वन प्लेस. ओके, नाउ यू कैन डू द सेम थिंग. अब आप इसको मोल्ड कैसे कर सकते हो, आप इस पूरी एक्सेल वर्कबुक में यहीं पर जनवरी का कोई टैब बना दिया, यहाँ नीचे फरवरी का बना दो, फिर मार्च का बना दो. अप टू यू. यू वांट टू क्रिएट सेपरेट एक्सेल शीट्स फॉर एवरी मंथ, और यू वांट टू क्रिएट वन एक्सेल शीट. उसी एक्सेल शीट में आप अलग अलग हेड्स बना दो, ये जनवरी, ये फरवरी, अलग अलग टैब्स बना दो, जनवरी का टैब, फरवरी का टैब, मार्च का टैब. ठीक है, या अगर आप ईयरली टैब बनाना चाहते हो, only up to you how you feel comfortable. ठीक है, so ये मेरी first sheet है. Then I come now, one more thing in this. Now obviously मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ expenditure करती हूँ, so I cannot have this Excel sheet. मैं अपना लैपटॉप तो कैरी करती नहीं हूँ हर जगह. So the easiest method I use is I use notes on my phone. Notes बना रखे हैं फोन में. I keep writing it down. Today metro का expenditure इतना हुआ, कैब का इतना हुआ, whatever bill मैंने इतना पे किया. So I keep noting it down here, and whenever I get time I transfer it to my Excel sheet. So this is the simplest, most easiest way of keeping a record. आप यहाँ से आराम से Excel, अगर आपको बहुत इजी है एक्सेल को ऑपरेट करना, आराम से सम टोटल हो जाता है. यहाँ मैं टोटल निकाल सकती हूँ. सो मैं अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लूं, सम इज इक्वल टू ये, ठीक है, जैसे एक्सेल को ऑपरेट करते हैं नॉर्मली, तो मेरा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेरा जनवरी में 13,918 रुपीज का हुआ. तो मुझे पता होगा कि अगर मेरी लेट्स अज्यूम टोटल जो मेरा इनफ्लो है वो 40,000 का हुआ है. ठीक है, तो मेरी जो सेविंग्स हैं, अगेन आई कैन सिंपली राइट सेविंग्स हियर, and I can find the difference between my inflows and my outflows. कैलकुलेटर से भी कर सकती हूँ और एक्सेल शीट में भी कर सकती हूँ. मेरा जो सेविंग्स है 26,082 रुपीज. Now at least I know that 26,082 रुपीज मेरे पास है. थोड़ा सा कैश में होगा, थोड़ा बैंक में होगा, but at least I know and I can decide कि ठीक है 26,082 रुपीज, इसमें से 10,000 रुपीज I can afford to invest in mutual funds, or I can afford to invest in the स्टॉक मार्केट. ठीक है, या मैं इससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती हूँ, या मैं 10,000 रुपीज सेविंग्स बैंक से निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डाल सकती हूँ. आई हैव नाउ अ क्लैरिटी. और अगर मैं ये सब चीज अपने माइंड में कर रही होती, ठीक है, 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000 बच गए, इतने बच गए, ना कोई क्लैरिटी होती और ना मैं कोई डिसीजन ले पाती. ठीक है, comes out of my experience. May it हो सकता है the financial, the mind thing works for you, but for a lot of people this works very apt. ठीक है, so now I have this idea कि मेरे पास सेविंग्स है. हो सकता है उल्टा हो सकता है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो. उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी एक्सपेंडिचर्स अगर ज्यादा है तो मुझे कुछ कर्व करने की जरूरत है. मे बी मुझे अगले महीने थोड़ा कम बाहर खाना चाहिए, या थोड़ा कम कन्वेंस पे स्पेंड करना चाहिए. So this is my first step. Let me check the chat box in case you have any questions. कहाँ गया मेरा
chat box. अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ. I don't know why. But I'll take all of questions once I unshare the screen. The second tab is investments, जहाँ पे I keep a record of all the investments I have taken for that particular month or particular year. So for example, mutual funds मैंने clearly mention कर दिया कि मैंने 2 mutual funds में invest किया है, कितना amount किया है मैंने लिख दिया. Fixed deposit, PNB की fixed deposit में invest किया, SBI के fixed deposit में invest किया, sovereign gold bonds अभी आए थे. Do not be ऐसे bogged down if you do not understand these terms. If you do not understand what is a sovereign gold bonds, perfectly fine. मुझे भी last year तक नहीं पता था sovereign gold bonds क्या होता है. ठीक है, it's a kind of an investment. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के सेशन में आप पूछ सकते हो, समझा दिया जाएगा. तो इस बार अभी ऐसे वर्ड की जरूरत नहीं कि अरे ये कौन सा बड़ा वर्ड लिख दिया. अभी फोकस ऑन द थिंग दैट दिस इज हाउ यू मेंटेन रिकॉर्ड. सो सेपरेटली मैंने अपना एक इन्वेस्टमेंट का टैब बना लिया कि मेरी जो सेविंग्स हुई उसमें से मैं कितना इन्वेस्ट कर. ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग होगी वो भी मैं यहाँ दिखा सकती हूँ, या मैं अपनी यहाँ रिसिप्ट में दिखा सकती हूँ कि मेरी जैसे बैंक इंटरेस्ट इज माय सेविंग्स का इंटरेस्ट, राइट. मैं यहाँ दिखा सकती हूँ कि मुझे म्यूचुअल फंड से या फिक्स डिपॉजिट से कितनी अर्निंग हुई. आई कैन डू दैट. Excuse me, ma'am, there's a question in the Q&A box. How to check how much bank interest you have earned? Okay, the simplest way to check how much bank interest you have earned is through your passbook or through your bank statement. Okay, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है या फिर आपके पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो आप अपनी पासबुक लेके जाओ बैंक में, गेट द पासबुक अपडेटेड, और उसमें लिखा आ जाता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड. ठीक है, बैंक इंटरेस्ट जब भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा. बैंक अकाउंट ₹10, ₹50, बैंक इंटरेस्ट ₹10, ₹50, ₹100. ओके, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका, इफ यू हैव एक्सेस टू नेट बैंकिंग, लॉग इन टू योर नेट बैंकिंग अकाउंट. वहां पर भी ई स्टेटमेंट का ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट. सबसे सिंपल मेथड, कभी भी उसको एक्सेस कर लो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट पे क्लिक करो, वो आपके पिछले पुराने जितने भी 1 महीने, जितना भी आप टाइम पीरियड बोलोगे, 6 महीने 1 साल की पूरी स्टेटमेंट निकाल के आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देगा. और वहां पे इजिली आप देख सकते हो बैंक इंटरेस्ट लिखा होगा. बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट इज यूजुअली गिवन क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, हर महीने नहीं क्रेडिट होता है बैंक इंटरेस्ट. हमारे इंडिया में जो बैंक्स हैं वो क्वार्टरली बैंक इंटरेस्ट देते हैं, हर 3 महीने बाद. तो अगर मुझे जनवरी में इंटरेस्ट मिला है तो मुझे नेक्स्ट इंटरेस्ट अप्रैल में मिलेगा. ठीक है, सो पासबुक में ही पता चल जाएगा और स्टेटमेंट में ही पता चल जाएगा, आपको लिखा आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट. एनी अदर क्वेश्चन which is relevant now in the chat box? Oh, there are a few questions here. How many bank accounts should one have? At least one. One से ज्यादा है, totally depends upon you. Trishika, it totally depends upon you. I have 3 bank accounts, actually 4, and all of those are open for different motives, right? मेरा एक बैंक अकाउंट इसलिए ताकि मेरी उसमें सैलरी आ सके, स्पेसिफिकली फॉर सैलरी एंड ऑल मेजर ट्रांजैक्शंस. एक बैंक अकाउंट मैंने खोला था ताकि मेरी उसमें स्कॉलरशिप आ सके. स्कॉलरशिप, आई वाज अर्निंग अ स्कॉलरशिप, एंड उस स्कॉलरशिप के लिए एक स्पेसिफिक बैंक में ही बैंक अकाउंट मुझे खोलना पड़ा था, तो इसलिए आई हैव दैट बैंक अकाउंट. थर्ड बैंक अकाउंट इसमें बिकॉज मेरी एफडीज उसमें है. आई प्रेफर टू डू माई एफडीज थ्रू दैट थर्ड बैंक अकाउंट, राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ मेनी आर यू एबल टू मैनेज. अब मुझे कोई चौथा पांचवा खोलने को बोलता है तो मुझे लगता है कि नहीं, दैट्स गोइंग टू बी टू मच. But 3 bank accounts I can manage efficiently because I have these 3 for 3 different purposes. So at least one, maximum depends upon how much you are comfortable. When should we go and get our statements updated, yearly or quarterly? I would suggest quarterly. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वार्टरली तो कराओ ही अपडेट अपनी स्टेटमेंट्स. According to my religion, interest is haram or forbidden. Does this make anything complicated? No, not at all. See, I understand कि इस religion में, Islamic religion में, interest is something which is forbidden, but just because you belong to a particular religion does not mean that you cannot have a bank account or that bank account cannot offer you interest. ठीक है, हमारे पास ना इंडिया में I'm not sure, but हमारे पास Islamic banks भी हैं over the world. Islamic banks interest के concept में believe नहीं करते, as you said, ठीक है, because it's forbidden. Whatever be the reason, it's religiously followed. So Islamic banks कभी भी interest नहीं देते हैं, but because you belong to Islamic religion does not mean that you should be stopped from opening a bank account and having a financial literacy or financial interest. उसमें कोई complication नहीं होगी. ठीक है? Which type of account should I have? Start with the savings account, basic savings account.
Sarah Sija says, is there any paperwork to do for doing net banking? No. You just need to go to the bank, ask them for a net banking user ID and password. If you already have a bank account, तो आपको again आपसे बोलेंगे ये form fill कर दो, signature कर दो, आपको issue कर देंगे user ID and password, and you have it. जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, बैंक आपको इशू कर देगा. यू जस्ट नीड टू फिल आउट अ फॉर्म एट द बैंक. दैट्स इट. और अब वो फॉर्म भी ऑनलाइन होने लग गए हैं कुछ कुछ बैंक्स के. Can we apply for debit card online? Definitely, Vanchika, you can apply for debit card online, and then you can go to the bank to collect it, or sometimes bank sends it to you. Okay, I'm not, there are just too many questions coming in. Okay, what I'll do is I'll complete this Excel sheet, okay, and then I'll come back to the questions. ये एक बारी complete हो जाए, I'll take the rest of the questions in the chat box as well as the Q&A box, ठीक है. So ये मेरी investment की sheet थी. Then comes my TDS sheet. Now I earn salary, ठीक है. मैं एक प्रॉपर जॉब में हूँ. आई टीच इन अ कॉलेज, सो आई रिसीव अ सैलरी फ्रॉम माई कॉलेज. तो सैलरी पे मेरा टीडीएस कटता है. टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. बेसिकली टैक्स कटता है, ठीक है. टीडीएस के पूरे कंसेप्ट में नहीं जाऊंगी, बट बहुत ही सिंपल तरीके से व्हाट हैपेंस इज, एनीवन हु इज अर्निंग समथिंग above a particular limit, anyone who is earning any income above a particular limit has to pay tax to the government, ठीक है. मैं उस लिमिट को क्रॉस कर रही हूँ. द काइंड ऑफ सैलरी, द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट आई एम अर्निंग, आई एम क्रॉसिंग दैट लिमिट दैट हैज बीन सेट. लिमिट क्या सेट है वो बता देती हूँ. बेसिक लिमिट जो सेट है दैट इज 2,50,000 पर एनम. सो जो लोग 2,50,000 पर एनम से कम अर्न करते हैं उनको टैक्स नहीं देना होता. इंडिविजुअल्स को जो 2,50,000 पर एनम से ज्यादा अर्न करते हैं उनको टैक्स देना होता है. फ्यू एग्जेम्पशंस आर देयर, फ्यू अदर कंडीशंस आर देयर, बट ये बेसिक चीज है. सो सिंस मेरी सैलरी 2,50,000 पर एनम से ज्यादा है, मुझे टैक्स देना है. अनदर लॉ कम्स इन एंड सेज कि वर्दा को तो टैक्स देना है अपनी सैलरी पे, बट जो वर्दा को सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर, माई एम्प्लॉयर इज एसआरसीसी, एक कॉलेज है, तो कॉलेज को वर्दा को सैलरी देते टाइम पे कुछ अमाउंट काट लेना है, ठीक है. तो अगर मेरी सैलरी पर मंथ लेट्स अज्यूम 50,000 है, तो मुझे 50,000 नहीं मिलेगा मेरे हाथ में. आई एम गोइंग टू रिसीव 40,000 ओनली. 10,000 रुपीज एसआरसीसी इज गोइंग टू डिडक्ट and give to the government in advance as tax from my salary only. तो मैं तो टैक्स दूंगी ही दूंगी. एसआरसीसी भी मेरी सैलरी में से टैक्स पहले डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है. दैट इज टीडीएस. ओके, दैट इज गोइंग फ्रॉम माय सैलरी. दैट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस. मैंने उसको एक्सपेंस वाली शीट में नहीं पुट किया बिकॉज वो मेरा विलिंगली एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा खुद का एक्सपेंस, मतलब मेरा ही एक्सपेंस है, बट देन मैंने खुद की नीड्स एंड वांट्स पे वो एक्सपेंस नहीं बियर किया है. वो पैसा ऑटोमेटिकली कट के, मैंडेटरीली कट के, ऑब्लिगेटरी कट के गवर्नमेंट के पास चला गया है. इसलिए आई मेंटेन अ सेपरेट शीट फॉर माय टैक्स पर्पसेस कि मेरा टैक्स कितना कटा, मैंने खुद से कितना टैक्स दिया, मेरे बैंक ने मेरा कितना टैक्स काटा. इवन बैंक डिडक्ट्स टैक्स ऑन द इंटरेस्ट. सारे इंटरेस्ट पे नहीं काटता, कुछ कुछ इंटरेस्ट. अगेन जब इंटरेस्ट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट तो आपका बैंक इंटरेस्ट पे भी टीडीएस कटेगा, ठीक है. सो आई मेंटेन्ड अ सेपरेट शीट फॉर दैट कि मेरा टैक्स कितना कटा है या मैंने कितना टैक्स दिया है, बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी एक्सपेंस दैट आई हैव टू बियर एज पर द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड फाइनली आई हैव अ फोर्थ शीट जो मैंने रिसेंटली बनाई है, ड्यूज टू बी रिसीव्ड. देयर आर अ फ्यू पीपल जिनको मैंने पैसा दे रखा है, जिनसे मुझे वापस रिसीव करना है. तो मेंटेन अ रिकॉर्ड. आई हैव, मैंने भी कुछ लिखा नहीं है इसमें, बट आई बी राइटिंग इट डाउन कि मुझे फलाने ढमकाने लोग से या XYZ पर्सन से या अपने कोलीग से पैसा वापस लेना है. आई हैव गिवन सम अमाउंट टू देम एज अ लोन और एज an udhar, and I have to take it back from them, ठीक है. So now it depends upon you what kind of sheets you maintain, but this kind of a framework helps. If you want me to share this sheet with you, again for the purpose of reference, or so that you can use this sheet and make changes in it as per your own understanding and to keep your own record, I'll share it with the host team and then they can share it with you, okay. No issues with me at all. Now I think it's already 1 hour, so I am going to take a break, or break mein I'm just going to answer your questions. For those of you who do not have any question, they can just chill, have a cup of tea, relax. But for those of you who have asked questions, I'll just take them one by one. I'll just stop sharing my screen and I'll take the questions. Okay, first let me ask the host, is that fine if I take the questions in between and then I proceed with the remaining? Sure, ma'am. That's absolutely.
Okay, so Chayonika is asking, do we really need to update statements in our passbooks? Because we can easily check them through the bank apps and net banking sites. No. So as I said, there are two methods. Either you go to the bank and update your passbooks to have access to your statements, or if you have net banking or net banking access or mobile banking access, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, मैंने पासबुक्स यूज करना बंद कर दिया है 2 साल पहले. ठीक है, बिकॉज मेरे पास सारे अकाउंट्स का यूपीआई भी है, मेरे पेटीएम से लिंक्ड है, मेरे आईफोन पे से लिंक्ड है, तो मैं एक क्लिक करती हूँ, अपना पिन डालती हूँ और मेरे पास बैलेंस आ जाता है. मैं एक टोल फ्री नंबर पे डायल करती हूँ और मेरे पास पूरे लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं. सो इफ यू हैव मोबाइल बैंकिंग, इफ यू हैव नेट बैंकिंग, बहुत ईजी हो जाता है वो प्रोसेस. सो डेफिनेटली switch to net banking. Trishika is asking, how does one choose which bank to open your account in, since there are so many options available? Very good question, Trishika. There are just so many options available. आपको किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है, कुछ फैक्टर्स हैं जो, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये बैंक बेस्ट है या ये बैंक में मत करो. कुछ फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो बिफोर यू कैन डिसाइड. फॉर मी द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, 2 मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स वाज प्रॉक्सिमिटी, कि मेरा जो बैंक है जिसमें मैं बैंक अकाउंट खोल रही हूँ वो मेरे घर के पास हो या वो मेरे प्लेस ऑफ वर्किंग के पास हो. जो मेरा पहला बैंक अकाउंट खुला था, दैट वाज विद इन माय कॉलेज, बिकॉज आई रिसीव्ड माय सैलरी, आई रिसीव्ड माय स्कॉलरशिप्स in that bank account. I received my fortunately I am in the same college, I'm teaching in the same college where I studied from. So मेरा वही बैंक अकाउंट चल रहा है, SBI ही चल रहा है, क्योंकि वो SBI की ब्रांच मेरे ही कॉलेज के अंदर है. तो मेरी सैलरीज मुझे विड्रॉ करनी हो, पैसा विड्रॉ करना हो, पासबुक चाहिए हो, कुछ स्टेटमेंट चाहिए हो, चेकबुक इश्यू करानी हो, सो वो मेरे, क्योंकि कॉलेज कैंपस में ही है, प्रॉक्सिमिटी है, तो मेरे लिए एक्सेस करना बहुत ईजी है. सो प्रॉक्सिमिटी वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, डिसाइडिंग फैक्टर्स. एंड द फैक्टर वाज ट्रस्टवर्दीनेस. ठीक है, SBI इज अ रिनाउंड नेम, दैट्स व्हाई. ठीक है, बहुत सारे PNB, ICICI बैंक, येस बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो किस पे. लाइक ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे SBI की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं SBI का स्टाफ इज नॉट गुड, SBI ki staff is not friendly, they do not respond to you, etc., etc. So people have such experiences. So if you believe that this is true, you have had a prior experience with SBI ka not so good staff, you can definitely go to some other bank. Okay. Majorly we have public sector banks, private sector banks and foreign banks. A lot of people trust public sector banks because they have a government stake. So अगर आपको ये है कि मुझे safety का major issue है, safe रखना है, तो आप simply type करो Google पे best public sector banks in India, मोस्ट सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया, आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी. उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे मम्मा का अकाउंट है इस बैंक में तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, ये मेरे घर के पास है तो ठीक है, और उस बैंक अकाउंट में आप खुलवा सकते हो. ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी चेक कर सकते हो, बट देन इंटरेस्ट रेट ना ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे बैंक्स का, 2.7% to 3%, 3.5%, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. प्राइवेट बैंक थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं. सो इफ यू थिंक दैट प्राइवेट बैंक्स आपके लिए सूटेबल है एंड इंटरेस्ट रेट समथिंग विच इज अगेन अ फैक्टर फॉर यू, गो अहेड. ICICI, येस बैंक, IDBI, बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं. Prakriti is asking, what is the difference between net banking and UPI? Okay. Net banking requires you to have a user ID and password to have access to your bank account in a virtual form. ये user ID and password आपको आपका बैंक ही इशू करेगा, कोई और इशू नहीं करेगा, ना आप खुद से क्रिएट कर सकते हो इसको, राइट. बैंक आपको user ID and password इशू करेगा, आपको बैंक की वेबसाइट पे जाके वहीं पर लॉग इन करके जो उनकी फैसिलिटीज हैं उसको यूज करना. और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है नेट बैंकिंग में, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यू कैन इन्वेस्ट योर फंड्स थ्रू द नेट बैंकिंग, यू कैन पे योर टैक्सेस ऑल्सो थ्रू नेट बैंकिंग, राइट. बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, यू कैन चेक योर स्टेटमेंट थ्रू नेट बैंकिंग. UPI I would say is a छोटा भाई of net banking. ठीक है, UPI आप खुद बनाते हो, आपको बैंक नहीं इशू करता यूजर आईडी एंड पासवर्ड. यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, पेटीएम पे बना रहे हो, फोन पे बना रहे हो, you make it yourself by linking your bank account to some external agency. External agency in this case is maybe Google Pay or Paytm or Phone Pay. ठीक है, UPI के थ्रू सिर्फ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, पेमेंट ही, ट्रांसफर की. ठीक है, आप बाकी इन्वेस्टमेंट, आप बैलेंस चेक कर सकते हो. some apps allow you to check your balance through UPI also. But जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल E-स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, वो UPI के थ्रू नहीं होगा. ओके, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, नेट बैंकिंग थ्रू होगा, UPI के थ्रू नहीं होगा. सो UPI इज अ वेरी वेरी नैरोड वर्जन ऑफ नेट बैंकिंग. नेट का एक्सेस उसके लिए भी चाहिए, बट UPI आप खुद से क्रिएट करते हो, खुद से लिंक करते हो, एंड देन
transactions like payment and transfers are the main things that you do. Vanchika is asking, can we apply for a debit card online? Definitely. Most of the banks today give you a facility to apply for a debit card online. Dikshika is asking, how many types of bank account are there other than savings? There is something called the savings bank account. There's something called the current bank account. There's something called the fixed deposit account. There's something called the recurrent account. इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं. करंट अकाउंट यूजुअली इसलिए यूज किया जाता है जब आपका बिजनेस है, आप बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो. सेविंग्स अकाउंट तब होता है जब आप मेजरली सेविंग्स करना चाहते हो. एक्सक्यूज मी. एंड फिक्स डिपॉजिट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स करना चाहते हो. ठीक है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मिल जाएगी, कौन से ऑफर होते हैं. Nihal is asking, why do we have to pay tax when you're already paying TDS? I keep asking this question to myself as well. So Sarasija, what happens is, see, I have to pay a tax, right? मेरी income है कुछ, और let's assume मुझे उस पे 1 लाख का टैक्स पे करना है पर annum. TDS जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही कटता है. ठीक है, टीडीएस मेरी सैलरी पे कटेगा. लेट्स से जो मेरी जो भी सैलरी है उस पे टीडीएस कट रहा है 90,000 रुपीज, बट मेरा टोटल टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपीज. क्यों? बिकॉज मेरी सिर्फ सैलरी इनकम नहीं है. आई हैव इनकम फ्रॉम माई बैंक इंटरेस्ट ऑल्सो. आई हैव इनकम फ्रॉम माई वर्कशॉप ऑल्सो. मैं कोई वर्कशॉप लेती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ, तो मुझे इससे इनकम आती है. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं, इंटर्न एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है मेरी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी इनकम. मैं कुछ सेल कर रही हूँ, मुझे गेन हो रहा है, उससे मुझे इनकम आ रही है. सो अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी, तो मेरा एम्प्लॉयर मेरी सैलरी में से टैक्स तो काट रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट आई हैव अदर इनकम ऑल्सो विच आई हैव. तो इसलिए मेरा टोटल टैक्स इज ग्रेटर देन माई टीडीएस. इसलिए मुझे थोड़ा सा और टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इज एक्चुअली अ टैक्स ऑन माई अदर काइंड्स ऑफ इनकम. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ टीडीएस. टैक्स अमाउंट आपका टोटल, टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ योर टैक्स अमाउंट. अगर मेरा टोटल टैक्स 1 लाख बनता है और टीडीएस 90,000 पे कर चुकी है ऑलरेडी मेरा एम्प्लॉयर, तो मुझे अब 10,000 ही टैक्स पे करना है ओवर एंड अबाउट दैट. ठीक है. Sarisija says, can you please explain the second rule, like the first being open and operate a bank account? Second rule is that you need to be very clear and keep a record, keep a track of your sources of income. आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, बेसिकली आपके इनफ्लोज क्या है. बैंक इंटरेस्ट रेट, सैलरी, प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स. ठीक है, वर्कशॉप ले रहे हो उसका. ठीक है, बैंक, आपने किसी फ्रेंड को पैसा दिया, उसने आपको पैसा डबल करके वापस किया इंटरेस्ट के साथ. ऐसा होना नहीं चाहिए, फ्रेंड को इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए आपको, बट अगर ऐसा हुआ तो ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड रखना है. आपको अपने पता होना चाहिए कि मेरे इनकम कहाँ से है. फॉर एग्जांपल, जब मैंने कहा कि आप बैंक में अगर पैसा रख रहे हो, उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो भी इनकम है. A lot of you did not know that, so you need to know what are your sources of income. That is the second rule. Excuse me, ma'am. Actually, since we're running out of time, I was hoping we could wrap the session in the next 5 to 10 minutes. Okay, ठीक है. Isn't the session till 8 p.m.? No, ma'am. It was supposed to be a 1 hour session. So I thought it's 8 p.m. Oh, I'm so sorry. I don't know why I had this. Okay, I'm so sorry. Okay, No problem. let me just come to the last rule. Savings. ठीक है, अब आपने, when you have maintained this record in the Excel sheet or whatever way you wanted, that you have this income, you have this expenditure, you have this savings, now you need to decide. चौथा रूल ये बोलता है, fourth rule is savings is not the same as investment. Just because you are saving 26,000 rupees in your bank account, that is not an investment. Okay, but savings is the first step to investment. That is for sure. ठीक है, सेविंग्स का क्या मतलब होता है? सेविंग्स जस्ट मीन्स कि आपका जो स्पेंडिंग्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू योर इनकम. दैट्स इट. और जो आपका सरप्लस बच गया, वो जो सेविंग्स हैं, अब आपको वो डिसाइड करना है कि किस तरह से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो. सेविंग्स इज जस्ट द सरप्लस. इन्वेस्टमेंट इज savings put somewhere so that your money grows over a period of time.
ओके अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, सो अगर मेरे पास 26,000 की सेविंग्स है, उसमें से 10,000 रुपीज आई एम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. आई नो जनरली स्टॉक मार्केट का जो 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 10%, विच मीन्स अगर मैं 10,000 रुपीज लगा दूंगी स्टॉक मार्केट में और मैं होल्ड करूंगी, 10,000 रुपीज रखे रहने दूंगी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई अर्न रुपीज 1,000 इन दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न. अगर मैं उस पैसे को बैंक में ही रखती हूँ, बैंक का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इंटरेस्ट इज जस्ट 3%, 2.7%. सो दैट्स व्हाई दैट इज जस्ट अ सेविंग. आई एम नॉट एबल टू बीट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का रेट 4%, 5% है. तो अगर मैं उस पैसे को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में बचा के रखूंगी, अरे ये सेविंग्स हो गई 26,000 की, वाह 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 वाह, बैंक अकाउंट में संभाल के रखती हूँ, मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिस रेट पे मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड कमोडिटीज के जो मैं खरीदना चाहती हूँ, वो इतना ज्यादा है कि मेरे पैसे की वैल्यू जो मेरे बैंक में बढ़ा, दैट्स गोइंग टू डेप्रिशिएट अ लॉट. Therefore, I need to invest so that my money grows, and when my money grows, it grows at a good rate. Good rate का क्या मतलब है, एटलीस्ट इतने रेट पे ग्रो करे कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके. ठीक है, सो जो हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनका रेट ऑफ, उनको भी कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एफडीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एफडीज आर इन्वेस्टमेंट. सो इफ यू बिलीव एफडीज आर इन्वेस्टमेंट, एफडीज अलाउ यू इन सम मैनर टू बीट इन्फ्लेशन. एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट यूजुअली इट वेरीज बिटवीन 5% to 7%. और अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4%, तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू बीट इन्फ्लेशन. अगर आप 5% अर्न कर रहे हो, इन्फ्लेशन 4% है, तो ये 1% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न आप कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली अ ग्रोथ ऑन योर मनी. बट अगर आप इसी पैसे को बैंक अकाउंट में रखते जहां आपका इन्फ्लेशन 4% होता, आपका बैंक इंटरेस्ट 3% होता, तो एक्चुअली आप अपने मनी को डेटोरेट कर रहे हो. यू आर नॉट यूजिंग इट टू द फुल पोटेंशियल. देयरफॉर सेविंग्स इज नॉट इन्वेस्टमेंट, बट सेविंग्स इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द फोर्थ रूल. सिर्फ ये मत सोच के बैठना कि सेव कर लिया, बैंक अकाउंट में सेव कर लिया, सरप्लस है, टड़ा, आई एम डन फॉर द डे, perfect, this is my financial management. No, you need to explore the various kinds of investment opportunities. Start from the very basics. अगर आपको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट करना है, 10,000 को निकालो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन लिक्विडिटी कितनी है आपकी, पर डाल दो उसको. एटलीस्ट यू विल अर्न something over and above what you have been earning when you are saving in your bank account or when you're holding that money in your hand. Okay, so investment ke rules, investments ke instruments, I believe you are going to discuss in the upcoming sessions. But yes, remember to distinguish between your savings and investments. Investments, savings. Investments zyada फायदेमंद है. ठीक है. So this I really wanted to discuss a few practical examples, but I think it's my misunderstanding. I thought the session is till 8 p.m. but nonetheless I really enjoyed interacting with all of you and answering your questions. If the host allow, I'll take more of your questions. But yes, this was all from my side. And as I said, बहुत basic चीजें थी, बहुत basic चीजें थी. I believe a lot of you already know about these things. ये जो 4 रूल मैंने बताए हैं, these are not कोई ऐसे कोई बड़े से complex rules नहीं है ये, right? Someone has not written them down in some epic or book, etc. These are very simple things which I believe majority of you know. But then the problem is implement नहीं होता है. Okay, implement karna hai, and that is the first fundamental and the basic thing that you need to do before you can go on to much complex things like budgeting, income tax returns, saving your taxes, investments, mutual funds. The financial literacy arena is endless actually. Okay, Thank you so much, ma'am, for such a fun and insightful session on the basics of personal finance. Your advice to actually find ways to apply the concepts instead of just, reading up about them is very valuable. And I'm sure I speak for everyone when I say that this session has helped us, start on our journey of taking control of our personal finances. So thanks a lot, ma'am. Thank you so much. I had an equally nice time. And thank you so much for everyone who is sending in their appreciations. Thank you so much. I had an amazing time. And I really, I would appreciate if you can just apply this small basic things in your life. I think more than these, compliments that are flowing in, if you can apply them, actually, these 4 rules, simple rules, and then study about more of the things later, this session would, as in my day and my time, would get accomplished, and I'll feel more happy about it. Thank you so much.
we would also like all the participants for joining in. In tomorrow's session at 11 a.m., we'll be looking at the concepts of debt management and credit scores. So hoping to see you all there. We're also sending an optional feedback form in the chat. Please feel free to give any suggestions or feedback in the form. This will help us ensure a smooth experience for all of you in the upcoming sessions. Thank you. Yeah, guys, if anybody wants to stay back for the Q&A session, they can stay back. Others can leave. Thank you so much. Also, ma'am, if you would want to answer the questions that are there, you can please go ahead and do that. All right, definitely. Okay. Lindsay is asking, how do you stop an account if you have multiple accounts, as there is money charged for minimum balance after a certain amount of time, so balance can go in minimum. I believe you're asking, Lindsay, how to close an account. If you have multiple accounts, how do you stop an account? I believe you're asking how to close an account, right? Because if you do not, you rightly said, if you do not maintain a minimum balance, a lot of banks ask you to maintain a minimum balance in their account. For example, I know a few banks require you to maintain at least 1,000 rupees in your bank account. और अगर आपके पास 1,000 rupees bank account में नहीं है, they charge you some fee or penalty. Okay, so if you're asking how to close an account, stop करने का तरीका नहीं है, but if you want to close that account, you can again give an application, right? अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग पे भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहां पे आप क्लोज कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट विजिट द ब्रांच, टेल देम आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट, प्लीज गिव मी अ फॉर्म, यू फिल दैट फॉर्म, साइन, सबमिट इट, दैट्स इट, सिंपल. ठीक है, जितना इजी अकाउंट खोलना है उससे ज्यादा इजी बंद करना है. बट अकाउंट बंद करने से पहले मेक श्योर दैट यू retrieve the money that you have in your account. If you have any balance, withdraw it first and then apply for an application to close it. Panaga is asking, is it wise to open a post office savings account just to save money, as it is comparatively has a higher interest rate? Definitely, why not? Why not? Even if you have gone through the budget of this year, जो भी February 1st को announce हुआ है, the government is again pushing post offices savings account. They are wanting people to put their money in post offices savings account because of high interest rate. Secondly, more than bank branches हमारे पास post offices हैं, ठीक है? और अब government क्या कर रही है कोशिश to link these post offices savings account to the core banking solutions, which means गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इंश्योर कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना बैंक एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, तब भी आपको सिमिलर बैंकिंग सर्विसेज मिल जाए. फॉर एग्जांपल पासबुक्स, फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग, फॉर एग्जांपल एटीएम से विड्रॉ करना, जो कि यूजुअली पोस्ट ऑफिस नहीं ऑफर करता है. सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड. पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो अ सेफ ऑप्शन. इट इज मोर वाइड स्प्रेड, it has a higher interest rate, and the government is encouraging that. So definitely. Rasika is asking, were you talking about EPF, Employee Provident Fund, when you said your employer is deducting money from your salary? Yes. So my employer deducts a lot of portions, right? बहुत सारे portions हो सकते हैं. One is my TDS, one is Provident Fund, right? Employee Provident Fund जो employer deduct करता है. Then there are other types. For example, कभी-कभी वो कुछ donation का amount deduct कर लेते हैं. COVID के donations का amount deducted. Then there are some kind of other welfare funds, contribution to the Delhi University Welfare Fund. So we have a DU Welfare Fund, Staff Welfare Fund. So these are the few kinds, but majorly it's Provident Fund का deduction and TDS का deduction. Trishika is asking, government will take 30% tax on crypto gains. What is your opinion? Okay. See, we already knew that the government is not going to let crypto as it is. They are going to introduce some kinds of rules, regulations, safeguards.
on cryptocurrency. So अभी भी गवर्नमेंट का यही कहना है, the finance minister has announced that क्रिप्टो करेंसी पे या क्रिप्टो के गेन्स के टैक्स लगेगा, बट देन दे आर नॉट येट लीगलाइज्ड, राइट? कोई लीगल स्टेटस अभी भी नहीं दिया गया है, बट देन द गवर्नमेंट रियलाइज दैट लीगल स्टेटस तो चलो बाद में दे देंगे, बट राइट नाउ सिंस a lot of people are joining the bandwagon, people are not aware about what cryptocurrencies are. They just know that okay, पैसा डालोगे 100% इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा एक साल में, बस मजे हैं, राइट? दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिस्क्स एसोसिएटेड विद क्रिप्टो गेन्स, एंड दैट इज व्हाई टू रिस्ट्रिक्ट पीपल दैट देखो आपको सिर्फ बैंड वैगन नहीं ज्वाइन करना, जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग दिस यू डू नॉट हैव टू ज्वाइन द हर्ड. That's why the government has introduced this crypto gain tax. ठीक है? With this crypto gain tax, I believe, personal opinion has, since you asked for my opinion, I believe because of this crypto gain tax, the people who are just investing in crypto on the basis of hearsay, they will become aware. Because अब उनको टैक्स देना पड़ेगा, whenever they earn again they'll have to pay tax, so they'll benefit the pros and cons कि मुझे करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं, करूंगा तो रिस्क क्या है, बिकॉज अगर लॉस हो गया, लॉस होने का भी इतना प्रोबेबिलिटी जितना प्रॉफिट होने का है. अगर लॉस होता है क्रिप्टो करेंसी से, यू कैन नॉट सेट इट ऑफ, आप उसको किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है? आप माइनस नहीं कर सकते उस लॉस को, बट अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तो आप अर्न करो, बट उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको. तो अब people who are investing in cryptocurrency will have to weigh the pros and cons. इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा तो मुझे बियर करना पड़ेगा, मुझे उस पर कुछ रियायत नहीं मिलेगी, या ना करूं, राइट? सो पीपल विल एक्चुअली थिंक अबाउट दीज थिंग्स जो वो पहले नहीं सोचते थे, ऐसे इन्वेस्ट कर देते थे. ओके, ताने इज आस्किंग, कुड यू प्लीज टेल अबाउट व्हाई टैक्स इज पेड even after TDS? That's because tax, you can understand it this way. Tax एक broad term है, TDS उसका एक पार्ट है, ठीक है? टैक्स अगर मुझे 1 लाख रुपीस पे करना है, अगर मेरी ओवरऑल इनकम पे टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपीस का, और मेरे एम्प्लॉयर ने TDS काटा है 90,000 रुपीस का, टैक्स 1 लाख है, TDS 90,000 कट चुका है, तो ये जो डिफरेंस है 10,000 का, ये मुझे पे करना है अभी. Okay, my overall tax amount can be greater than my TDS amount because TDS यहाँ मेरी सैलरी पे कट रहा है. हो सकता है मेरी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो, मेरा बैंक इंटरेस्ट से मैं इनकम अर्न कर रही हूँ, मैं ट्यूशन से इनकम अर्न कर रही हूँ, तो उस पर तो TDS नहीं कटा है. मैं हाउस रेंट से इनकम अर्न कर रही हूँ, मैंने अपने हाउस को रेंट पे दे रखा है, उस पर तो मेरा TDS नहीं कटा है. तो TDS मेरा कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम पे कटा है, बाकी इनकम पे मेरा TDS नहीं कटा है, तो इसलिए मुझे टैक्स देना पड़ेगा. मेरा ओवरऑल टैक्स जो बन रहा है, इट्स ग्रेटर देन द TDS अमाउंट, देयरफॉर बैलेंस, only the balance amount I need to give as tax, not the overall amount. Okay, Rasika is asking, could you explain TDS once? Okay, tax deducted at source is basically means कि whatever income I am earning, जो भी सोर्स है उस इनकम का, ठीक है, तभी हम उसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं. जो भी सोर्स है उस इनकम का, उसी सोर्स पे, उसी देने वाले पे, उसी सोर्स पे मेरा टैक्स कट गया. सो मेरे एग्जांपल के केस में SRCC इज माय एम्प्लॉयर, आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SRCC, मेरा वहां जॉब है, मुझे सैलरी कौन देता है? SRCC, ठीक है? सो SRCC इज माय सोर्स ऑफ इनकम. नाउ इफ SRCC गिव्स मी, मेरी सैलरी अगर 50,000 पर मंथ है, तो SRCC क्या करेगा? 50,000 में से 10,000 is going to deduct as tax and 40,000 is going to give to me. 10,000 डिडक्ट करके कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट को देगा SRCC, 40,000 मुझे देगा, ठीक है? 40,000, ऑल्दो 50,000 पूरी मेरी ही सैलरी है, बट SRCC ने क्या किया? SRCC ने बोला कि मैं आपका पहले से ही टैक्स काट देता हूँ, 10,000 काट के पहले से गवर्नमेंट को दे देता हूँ, और 40,000 आप रख लो, आपको वैसे भी टैक्स देना ही है बाद में, तो मैं पहले से ही काट के गवर्नमेंट को दे देता हूँ. और SRCC ऐसा क्यों कर रहा है? उसको मजा आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा, बिकॉज देयर आर रूल्स ऑफ TDS, राइट? इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाइज कि एम्प्लॉयर्स को TDS काटना ही काटना है, उनकी ऑब्लिगेशन है. अगर SRCC TDS नहीं काटेगा मेरी सैलरी में से, SRCC को नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से. SRCC वुड बी एट अ डिफॉल्ट, एम्प्लॉयर वुड बी एट अ डिफॉल्ट, तो SRCC के लिए कंपल्सरी है, ठीक है? सो TDS इज नथिंग बट अ टैक्स विच इज डिडक्टेड
by the source, by the giver of income beforehand only. देते टाइम ही टैक्स काट दिया, ठीक है. This is TDS. Kashaf Fatima is asking, how can we start earning at an early age to manage our personal expenses while in the first year of college? There are multiple things that you can do if you want to start earning while you are still in college. बहुत सारे opportunities हैं, ठीक है. So what I did was, I'll give you my example and then I'll tell you other opportunities. I started with my hobby business. I used to make cards. I liked making cards, handmade cards, handicrafts, etc., etc. So I started my chotu sa business out of my hobby, and I started taking orders within my college, from my friends, from my relatives, and then it panned out all across India because I promoted it via social media. ठीक है, बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, maybe 5,000 4,000 per month, but then as a college going student, it was a good amount for me. It gave me a lot of confidence. So if you're not into any such kind of a thing, no worries. बहुत scope है content writing में. If you like writing, पढ़ना पसंद है, रीड करना पसंद है, लिखना पसंद है, किसी भी चीज के बारे में, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, कंटेंट राइटिंग के बहुत डिमांड है. पीपल आर आस्किंग यू टू मैनेज देयर सोशल मीडिया पेजेस, क्रिएट कैप्शंस फॉर देयर पोस्ट, ठीक है. ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है, ठीक है. और ये सब फ्रीलांसिंग बता रही हूँ मैं, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज आई एम नॉट टेलिंग. फ्रीलांसिंग मतलब पार्ट टाइम आप कर सकते हो, ठीक है. पेड इंटर्नशिप मिलती है, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलती तो कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग में there's opportunities. ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग बहुत अपॉर्चुनिटीज है, एंड अगेन गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हो, यू विल गेट मल्टीपल अदर थिंग्स जहां पे आप अर्न कर सकते हो. Okay, Dikshika is asking, if I don't have any source of income other than salary, do I have to pay taxes? If your salary exceeds the basic exemption limit, which is 2,50,000 per annum, then you have to pay taxes. Doesn't matter other source of income है या नहीं. अगर आपकी salary 2,50,000 per annum से ज्यादा है, तो income tax law ये कहता है कि आपको tax देना है, ठीक है. स्लैब रेट्स होते हैं, 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट होती है, 2,50,000 के ऊपर 5% टैक्स लगता है. सो अदर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, इट इज मोर अबाउट कि जितनी भी इनकम है, किसी भी सोर्स से है, सैलरी किसी और से है, क्या आप वो 2,50,000 की लिमिट क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे. नहीं कर रहे, कोई टैक्स नहीं देना, कोई कंपल्जन नहीं है. कर रहे हो 2,50,000 से ज्यादा क्रॉस, टैक्स बनता है आपका. और इसमें स्कॉलरशिप नहीं आती. स्कॉलरशिप इज एग्जेम्प्ट. स्कॉलरशिप is an income, but it's an exempt income, ठीक है. बहुत ज्यादा टैक्स हो रहा है यहाँ पे, but हाँ, it's an exempt income. तो उस पे अगर वो 2,50,000 से ज्यादा भी है आपकी स्कॉलरशिप, उस पर टैक्स नहीं लगता. Would you have to pay income tax even after TDS? Yes, it is a possibility that I have to pay a tax amount over and above my TDS because my overall tax is greater than my TDS. Do we have to do a particular course for content writing? No. You can if you want, but it is more about passion, I believe. If you like writing, content writing ऐसे कोई specialized field नहीं है. Like if you like writing, if you like, you know, if you have these thoughts sorted out in your mind and you can read and write about something, definitely you can do that. But there are, I think, courses available. If you want to be a professional content writer, there are courses available which you can pursue, but it's not a compulsion. Freelancing, it's not a compulsion. Which tax regime should one opt for, new or old, and why? Okay, so it totally depends upon what kind of an income that you have, ठीक है. Usually government क्या बोलती है, whenever you are deciding your tax, दोनों से calculate करके देखो, ठीक है. So I calculate through both. I calculate my tax through the old tax regime also, and then through the new tax regime also, and then जिसमें मेरा कम tax बन रहा होता है, I go for that. And why का reason ये है, because हम कम टैक्स पे करना चाहते हैं, सो हम वही ऑप्ट करेंगे जिससे हमारा कम टैक्स बन रहा है, ठीक है. सो ऑप्शनल है, न्यू एंड ओल्ड के बीच में ऑप्शनल है, तो इसलिए ऑप्शन इसलिए दिया गया है सो दैट यू कैन calculate your tax to the old tax regime, you can calculate it to the new tax regime, and then you can see किसमें कम आ रहा है, and वो ऑप्ट करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दो जिसमें भी कम आ रहा है. If we have a question or ever need some advice, how can we reach out to you? I'll put my
email ID in the chat box so that if you wish to get in touch with me or ask any additional question or advice, you can email it to me and I'll be more than happy to answer it. So I've just sent across my email ID in the chat box. How can I develop my skills in English? I think the best way to do is through reading, right? Again, वैसे कुछ courses वगैरह होते हैं available, but then by experience I'm telling you सबसे best तरीका है अपनी English अच्छी करने का और writing skills, अपनी vocabulary develop करने का और speaking skills भी develop करने का fluent English में read. जो भी genre पसंद है, novels पसंद है, fiction, non-fiction, newspaper, anything, read as much as you can. And if possible, read out loud. बोल के पढ़ो. Companies file taxes for employees at times. Should we do it ourselves or rely on them? No, companies do not file income tax returns for their employees. Company may pay taxes on behalf of the employees, जिसको हम TDS बोलते हैं. But companies कभी income tax return नहीं file करती हैं. इनकम टैक्स रिटर्न आपको खुद ही फाइल करनी है या फिर आप डेलीगेट कर सकते हो किसी सीए को या किसी और इंटरमीडियरी को, ठीक है. Employer can also be an intermediary, but I think you should do that only if you trust them. Yeah. Otherwise, you should do it yourself. मुश्किल नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना. I think I've exhausted all questions. Yes, ma'am, that was all the questions that we had. Right. Thank you so much, ma'am. It was a very informative session. We really enjoyed it. So thank you so much for that. I enjoyed it. Thank you so much for having me and all the best for the upcoming sessions. It was a pleasure. And thank you, everyone. So with this, now we'll be wrapping up the session. So we're done with our Q&A round. So thank you all for attending. So you guys can start leaving. Thank you. Take care. Bye-bye.